Am I audible guys? मो आवाज क्लियरली सुबुची आपण माननको लेट मी नो. ओके. आज सेशन हिस्ट्री मु नहीं आउ दीटा सेशन ने भी आज एवं काली मोस्ट प्रोबेबली देन तापरे हमर सब सार माने सब नेबे क्लासेस. ओके गाइस, स्टार्ट करिया. आउ डिले करिया नहीं. जति आसी जंती समस्ते. नमस्कार नमस्कार नमस्कार. ओके. केमती कोन सब समस्त प्रिपरेशन चलची. प्रिपरेशन भालो भालो चलछे. ओके. तो आज सेशन नवा पूर्व मुझे देखी आमर सिविल सर्विस पिलांई सिविल सर्विस पिलांई जो मैंने अपकमिंग पिला प्रिपरेशन करने चाहूँगी ऑनेस्ट प्रिपरेशन ओनली 30 स्टूडेंट आमर दरकार ओनली 30 ऑफलाइन 30 ऑनलाइन रे जो मानक इंडिविजुअली पूरा गाइड करा टू मेक टू गेट सक्सेस. 9 अक्टोबर स्टार्ट होची आफ्टरनून बैच. समस्त कंफर्टेबल टाइम अनुसार आप नहीं पारे. दिस इज देन आउ गोटे आरंभ है जोटा कि ग्रेजुएशन रु आप स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन आफ्टर +2 यू विल स्टार्ट प्रिपरेशन. या कंटाक्ट करंतु ऑफिस नंबर है जोटा कि पूरा 1 ईयर रे मास को 1000 टंका भी पड़ोनी आपको से प्रिपरेशन करेंगे. ओके, लेट स्टार्ट गाइस. तो ओपीएससी प्रीलिम्स देखा. Where have the remains of the highly advanced water management system of Indus Valley civilization? जल्दी जल्दी जवाब दियो. हाईली एडवांस मु पढ़ाइला बेले क्लासेस रे कहिची हाईली एडवांस वाटर मैनेजमेंट. धोलावीरा. धोलावीरा कौन जगह रे किए कहि परिबो व्हिच प्लेस? धोलावीरा. धोलावीरा जोंडे कि हाईली एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम थिला have been discovered in धोलावीरा. the sophisticated water conservation system सेटा बहुत बड़ा यूनिक फीचर थिला. गुजरात रे पाइबो ये धोलावीरा. गुजरात रे यूनेस्को साइट अछि एवं डिस्कवर्ड इन 1967-68 बाय जेपी जोशी. एटा वेरी इंपोर्टेंट इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट जेपी जोशी. राइट. ये हला और धोलावीरा. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन. एटा भलो से क्वेश्चंस ता देखि कि खुशी हे जबनी. ता देखो ताको आगे भाबो देन आंसर दवा पे ट्राई करो. मन इच्छा आंसर दवा पे ट्राई करो. फाउंड इन खंडगिरी, discovered in 1820, written in Pali language, and the inscription was deciphered by James. yes. देखो देखा जाओ कौन दौरान किए आंसर दौरान. यहाँ जब ठीक आंसर देदेव जानवी कि तुम भल से पढ़ीच आउ भल से क्वेश्चंस को भी पढ़ुच. कह जल्दी कह.
it is found in Khandagiri. आंसर दियो जोटा कि देखो केमिति पढुच पाठ. It is not found in Khandagiri, in Udayagiri. And they are discovered in 1820. That is correct. It is written in Pali language. Not, it is not written in Prakrit language. So this is wrong. This is wrong. 1 wrong, 3 wrong, second and fourth. James Princess, that is correct. So C is the correct answer. Very good, very good. Thank you, Aisha. So the Hathi Gumpha inscription is a 17 line inscription in a Prakrit language. Inside in a Brahmi script and Prakrit language. सेटा मन रखिथिबो देखो क्वेश्चन टिके कोंठी मिस कर जाउछ तुमर भूल होवार चांसेस बढ़ी जाउची. Slight mistake. And Hathi Gumpha inscription कोंठी उदयगिरी. It is in Udayagiri, not Khandagiri. Khandagiri no. Thank you, Anant. So the inscription was deciphered by James Pearson. That is also correct one. So the inscription first discovered by James Prince 1820 was copied by Colonel Mackenzie, but credit goes to James Prince who succeeded for the first time deciphering the inscription from the fresh facsimile prepared by the Kiko in 1837. It is inscribed by the Jain king Kharavada. Kharavada it inscribed करथिले first through second century रे एई समय रे जानिथिबो. Best known king of Moha Meghavahana dynasty या छेदी dynasty या छेती dynasty मध्ये who was the court physician of Kanishka. Who was the court physician of Kanishka? Thank you, Prakash. Who was the court physician of? तो बड़ा ध्यान दियो, तो आता जाता रहता है. Court physician of Kanishka. चरक. चरक लिखिथिले चरक संहिता. चरक लिखिथिले चरक संहिता. आयुर्वेदर एनसाइक्लोपीडिया माना जाए. इट इज कंसीडर्ड एज एनसाइक्लोपीडिया ऑफ आयुर्वेद. चरक वाज एटा भूल देछि आंसर ए हबो. The court physician of Kanishka the Great, he was one of the principal contributor to the ancient art and science of Ayurveda, a system of medicine and lifestyle developed in ancient India. He is sometimes referred to as the father of Indian. चरक लिखिथिले around फादर ऑफ मेडिसिन कह जाए. चरक संहिता that is the encyclopedia आयुर्वेद. से बहुत सारा प्रिंसिपल अच्छी डायग्नोसिस विषय क्योर केमती हम ये मेडिसिनल क्वालिटी एंड फंक्शन ऑफ द 1 लाख प्लांट्स तो या उपरे सब किछि. देन कुशान एम्पायर विषय जानिबो. कुशान एम्पायर वाज ए पावरफुल सेंट्रल एशियन एम्पायर. कुशान एम्पायर इज ए पावरफुल सेंट्रल एशियन एम्पायर that lasted from the 1st to 3rd century. Kushana played an important role. So ये जो ता related concept के देखी दबो. ता related concept के देखी दबो. कुशाना रो most important ruler है कनिष्का. कनिष्का जे की साका इरा स्टार्ट करथिले. साका इरा. साका इरा केबे 78 AD 78 AD साका इरा. तीनटा इरा अछि. गोडेला विक्रम इरा या विक्रम संवत. विक्रम इरा आ गोडेला साका इरा. विक्रम इरा आला 8 BC 58 BC येला 78 AD साका इरा. एंड आ गोडेला गुप्ता इरा. गुप्ता इरा आला
केबे 319 और 320 एडी से अनुसार मन रखियो। यस कनिष्का समय फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल आइथिला व्हिच ग्रेट इंडियन एस्ट्रोनॉमर डिड गिव द थियोरी विथ ग्रेट इंडियन एस्ट्रोनॉमर गिव द theory that all things fell on the earth by law of nature as it was earth's nature to attract and keep things। किए कहिथिले जल्दी जल्दी वो ग्रेट एस्ट्रोनॉमर ब्रह्मगुप्ता ब्रह्मगुप्ता से देथिले कि समटाइम्स ऑफ जोटे कि अर्थ रो ग्रेविटेशनल फोर्स कथा 7th सेंचुरी रे इंडियन एस्ट्रोनॉमर ब्रह्मगुप्ता स्पोक ऑफ द ग्रेविटी अट्रैक्टिव फोर्स। इन द 14th century यूरोपियन फिलोसोफर जोटे कि आल्बर्ट सैक्सोनी एंड विदान सी मध्य इन्फ्लुएंस होइतिले फ्लेमिश स्कॉलर मध्य सेही भलिया थ्योरी को। Which of the following books was not written by Harshvardhan? That very very important. Let me know. Which of the following books was not written by which of the following book was not written by Harshvardhan? रत्नावली, नागनंदा, कादम्बरी, प्रियदर्शी। रत्नावली, नागनंदा, कादम्बरी, प्रियदर्शिका बेसिकली तीन टा लिखी तीनटा लिखी यस कादम्बरी भाई बाण भट्टा लिखी बाण भट्टा लिखी कोट पोएट ऑफ हर्षा हर्षांकर कोट पोएट थिले हर्ष वर्धनंकर कोट बाण भट्टा सी लिखी कादम्बरी एंड हर्ष चरित्र एथर बहुत डिटेल्स इनफॉरमेशन देथिले लड़ई भड़ई सब यहाँ देखू था गोटे सेकेंड ओके गाइस तो आम देखुले लिटरेरी जो हर्षा वाइडली पॉपुलर थिले थ्री संस्कृत प्ले रत्नावली नागनंदा एंड प्रियदर्शिका बाणभट्टा कोट पोएट थिले लिखिले हर्ष चरित्र एंड कादम्बरी एंड जोटे कि यम
Who did introduce the system of land measurement in India? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चंस। लैंड मेजरमेंट इंट्रोड्यूस किए करथिले? यस, बढ़िया, वेरी गुड प्रकाश। ये इंट्रोड्यूस करथिले अलाउद्दीन खिलजी प्रथम थर पई लैंड मेजरमेंट इंट्रोड्यूस करथिले। अर्लियर रूलर लाइक अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी इंट्रोड्यूस द गज ई सिकंदरी, गज ई सिकंदरी यूज्ड लैंड मेजरमेंट फॉर Suri elaborate way रे मोर सिस्टेमेटिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव लैंड मेजरमेंट करथिले ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେଇ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को अकबर मध्य फॉलो କରିଥିଲେ, राइट। अकबर मध्य फॉलो करथिले। हिज रिफॉर्म इन्वॉल्व मेजरिंग लैंड ए स्टैंडर्ड यूनिट गजी सिकंदरी क्लासिफाइड लैंड क्वालिटी, लैंड कोठी भलो चाष होउची भलो चाष होउनी, तो सेही अनुसार सो अकबर फेमस लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म करथिले बाय टडर मॉल तांकर रेवेन्यू मिनिस्टर थिले कहले चले, ये करथिले। अलाउद्दीन खिलजी गेव द ऑर्डर टू मेजर लैंड, सब लैंड को ऑर्डर देथिले कल्टीवेशन लैंड कि चाष होउची, अलगा लैंड तो कि लाभ नै, ए माने शेरशाह सूरी ताको रिफॉर्म कर ट्राई करथिले क्वालिटी ऑन एंड देन अकबर बेसिकली आनी दहासला जो शेरशाह सूरी क्लासिफाई आउरी कले 10 ईयर with heavy reference built by Mughals. One of the following pair is not correct. बुलंद दरवाजा मदुल मदुद्दौला कम जहांगीर के बाद मस्क बाबर आगरा फोर्ट शाहजहां। यार आंसर ये कहले देखिबा भल से भाभी चिंती कुओ। कैन आंसर बुलंद दरवाजा किए बनैथिले? फॉलोइंग पेयर नॉट करेक्टली में करेक्टली में जो मैंने एजाए सब्सक्राइब करी नाहंती ओएस हब चैनल आछंती आगो को मिलिबो बहुत सारा। तो बेसिकली ये आंसर टिके ये अच्छी बुलंद दरवाजा बेसिकली बिल्ड करथिले। देन आगरा फोर्ट जो मेन स्ट्रक्चर आगरा फोर्ट सीधे अकबर करथिले 1505। जो देखिबो मदुद्दौला टॉम ये जहांगीर फतेबाद मस्क, फतेबाद मस्क जो देखिबो जहान यही समय करथिले नूरजहान जे कि तांकर फादर थिले जहांगीर एटा हबो नाही। बट कथा लेकि ये अच्छी बात कथा ये तो सर जहांगीर समय तो होता सो के डाउट अच्छी नहले आंसर तुमर बी हबा कथा जदि नूर जहान करथिले नॉट बिल्ड बाय जहांगीर जहान जहान के नूर जहान करथिले सेहि पई जदि आंसर की हबा कथा। बट हाँ देखियो जहांगीर जहांगीर रो वाइफ थिले सी सेहि पई डाउटफुल अच्छी से मुझे आंसर छाड़ी देती। व्हाट वाज द फर्स्ट नेटिव रूलर ऑफ इंडिया टू एक्सेप्ट सब बहुत इजी अच्छे डैम इजी
ये फर्स्ट ये की सब्सिडियरी हैदराबाद निजाम ऑफ हैदराबाद केनेला केनेला मैसूर का सेकंड the alliance was an agreement a company and the Indian police granting the British paramountcy over the states जानिଛ सब्सिडियरी ट्रिटी इंट्रोड्यूस करथिले बेसिकली आइडिया थिला डुप्लेक्स रो फ्रेंच गवर्नर देन ताको इंप्लीमेंट करले कि इंडिया रे बेसिकली ऑफिशियल कले ब्रिटिशर्स एंड बाय करथिले एवं हैदराबाद रो निजाम आगे which changed the designation of Governor General Bengal to Governor General. Yes, Achit. That's right. देखो एक तो ऊपर चढ़ जाऊचे आज बेस बहुत सारा क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री पाइबो कहना मॉडर्न हिस्ट्री नंबर ऑफ क्वेश्चंस या से करना जाने बहुत ही डैम इजी बट एठी इजी डिफिकल्ट कथा नुह कथा कि 1833 रो चार्टर एक 1833 ना फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आइथिले लॉर्ड विलियम ठीक गवर्नर जनरल बेंगल गवर्नर जनरल ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମୟର ବେସିକାଲି କମ୍ ବେସିକ ପାସ୍ ହେଇଥିଲେ ତାପରେ ସେ 1918 ଗଭର୍ଣ୍ଣର जनरल ୟାଙ୍କ ସମୟର ବେସିକାଲି ଡାଉନୱାର୍ଡ ଫିଲ୍ଟର versus intelligence and it sign a treaty of perpetual also very important direct question but ତା ସହିତ କନସେପ୍ଟ କୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ट्रिटी ऑफ परपिचुअल फ्रेंडशिप भी पढ़ा बेले 30 इयर्स फ्रेंडशिप जोटे कि क्या अटैक करेंगे बाउंड्री फिक्स कराइला 30 इयर्स टिल 1839 परपिचुअल ट्रिटी ऑफ अमृतसर जो 1800 को कहा जाए ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया रणजीत सिंह बनाई रिलेशन गोटे बाउंड्री डिसाइड करागला ट्रिटी रणजीत सिंह कथा जो देखा चाहिए देखी शुक्राचाकिया जो ये मिसिल आसते 12 मिसिल बापा थे शुक्राचाकिया मिसिल एवं से ये आसते एसोसिएट लोकल सेल लिटन रिपन एंड कर्जन वॉइस ब्रेक हो कि देख लो ठीक अच्छे ना नहीं 82 से इंट्रोड्यूस करते प्रथम थर पर लॉर्ड रिपर इनिशिएटेड मेनी रिफॉर्म साइड ऑफ द लोकल इंडियंस ड्यूरिंग द टेन्योर रिफॉर्म करते लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नो गुड विसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड रिपन देन लॉर्ड रिपन जॉर्ज फ्रेडरिक रॉबिन्सन कहा जाए सर्व एज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया इलवर्ट बिल्ड कंट्रोवर्सी हंटर कमिशन ऑन एजुकेशन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रिपील करवा फैक्ट्री एक्ट पास करवा 1881 मैसूर एंडिशन या समय 1881 आ गोटे सेंसस फर्स्ट फुल फ्लेजेड सेंसस 1881 भी या समय से जिन देखिद
a leader during revolt of 1850. उत्तर प्रदेश मध्य से जानी दियो बिहार एटा एते टाइम देबिनी मु बिहार 76 उमर हेतला तांकर जगदीश राजपूत हाउस जगदीशपुर थिले जे तांकर पेंशन मिल नथला सेहि पई ये करथिले तो ये लीडर थिले रिवोल्ट 1857 रिवोल्ट थिले लीडर थिले दिल्ली रु बहादुर शाह टू जॉन निकोलस जे की सप्रेशन कर निकोलसन सप्रेस लखनऊ थे हजरत महल तांको लॉरेंस सप्रेस करथिले कानपुर थे नाना साहेब कॉलिन कैम्बेल तांको सप्रेस कर झांसी एंड ग्वालियर रानी लक्ष्मी तांतिया तोपे जनरल ह्यूग रोज तांको सप्रेस करथिले बरेली रे खान बहादुर खान सर कॉलिन कैम्बेल कानपुर एंड बरेली दीटा को सप्रेस करथिले एंड इलाहाबाद एंड बनारस रे मौलवी लियाकत अली कॉलोनल ओनसेल सप्रेस करथिले बिहार रे यम टेलर consider the following events that occurred during the Indian freedom struggle. Chauri Chora incident, Morley Minter, Dandi March, and Montfort Reform. Each of the following correct chronological order. This is very easy one. And जदि तुम पढ़ी थी तुम भलसे आंसर दे पारिबो. जल्दी जल्दी जवाब दियो. चौरी चौरा इंसिडेंट केबे हितला 5 फेब्रुआरी 1820. मॉर्ले मिंटर रिफॉर्म खाली ईयर लिखले भी चलिबो. मॉर्ले मिंटर रिफॉर्म 1909. दांडी मार्च 1930. मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म 19. से अनुसार तुम ईयर अनुसार तुम क्रोनोलॉजी अनुसार सबुठू लास्ट रहिबो किए दांडी मार्च 1930 रे. सबुठू फास्ट रहिबो किए मॉर्ले मिंटर सेटा देखि दियो दीटा आगो तो बी रही गला और दियो क्रोनोलॉजी रे चौरी चौरा उत्तर प्रदेश रहीला इंडियन काउंसिल एक्ट या मॉर्ले मिंटर रिफॉर्म एंड 19 दांडी मार्च कर दिले. ओके. Where did Netaji Subhash Bose hoist the Indian flag? Where did Netaji Subhash Bose the Indian flag? Did Netaji Subhash Bose? तो ये क्वेश्चंस मु बदे लास्ट क्लास रे करी थिली बुले आउ थरे पळे आसी बट कथा ला कि ओपीएससी रो पचार थिला सेति पे रिपीट हे जाई बदे सुभाष चंद्र बोस सेंटलेस थिले डिक्लेयर कर देथिले फ्रीडम प्रथम थर पे पोर्ट ब्लेयर रे डिक्लेयर कर देथिले कि फ्री फ्रॉम ब्रिटिश सेति में एते इंपोर्टेंट. And with reference to Buddhist council, consider the following development. Pitaka and Vinay Pitaka are compiled in first Buddhist. Buddhism got split into Mahayana and Hinayana, the third Buddhist. So the following statement given are correct. Pitaka Vinay Pitaka compiled in the first Buddhist council. इंटा बुक्स अच्छी टेक्स्ट देखिए सुत्ता पिताका विनय पिताका एंड अभिधाम. तो ये सुत्ता पिताका एंड विनय पिताका फर्स्ट बुद्धिस्ट दैट इज करेक्ट. Buddhism got split into Hinayana and Mahayana in the third Buddhist. It is got divided into Hinayana and Mahayana in the fourth Buddhist council. So this statement is wrong. The one is correct. A will be the okay. Fourth Buddhist council le the so immediately after death of Asoka, sorry Buddha,
फर्स्ट बुद्धिस्ट 483 480 सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल होता 380 थर्ड होता 50 बीस अशोका चेयर करते फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल केबे होता किए कोई पारि व्हेन कनिष्का समय होता मुझे कही दूची कनिष्का समय होता ओके महाकाश्यप ये थे देन प्रेसिडेंसी नहीं फर्स्ट होता अजात शत्रु करे प्रथम जोटा कि काउंसिल से ही समय विनय पिटका मोनास्टिक आ गोटे क्वेश्चन पढ़ ये भलसे पढ़ी थब विनय पिटका क्या मोनास्टिक डिसिप्लिन सब्जेक्ट कौन ता भर अच्छी कौन विनय पिटका मोनास्टिक रूल्स ऑफ द मोनास्टिक ये उपाली एंड सूता पिटका बेसिकली बुद्धांकर तो मैंने एमती मन रख सूत्र बुद्धि बुद्धा जो मंत्र देले सूत्र से डायरेक्शन आनंदर डायरेक्शन उपाली डायरेक्शन ये एते डिटेल्स जाने रखे आ या टू डिटेल्स रे Socrates art is primarily a speech method 78 that is इसमें साका एरा से स्टार्ट करते साका एरा स्टार्ट करते ये बेल मेटल रो है बेल और ब्रास ब्रास और बेल मेटल स्टार्ट कर रहा कास्ट टेक्निक मेटल कास्ट टेक्निक डस्ट वर्क्स टेक्निक रे आगु करा होतला दस वेली चक्रा इज यूजुअली मेड यूजिंग ब्रास एंड निकेल एंड नेक्स्ट गांधी जी कर रेफरेंस टू महात्मा गांधी पॉलिटिकल इनिशिएटिव द साउथ अफ्रीका right Gandhi ji started weekly journal medium of communication says Gandhi established Tolstoy farm to train people manual labor scavenging and work correct statement स्टेटमेंट गुड़ा तुम मुंड खराब कर राइट टॉलस्टॉय फार्म करथिले लेबर खाली कम्युनिकेशन इंडियंस इटा 1904 Gandhi started the journal Indian Opinion the communication between Indian ideology which he expressed his opinion the Indian opinion नवजीवन एवं परे आसबि Indian opinion Gandhi founded Tolstoy farm transfer पाखरे अछि living communal harmony basic education and removal of untouchability Tolstoy farm also trained people in manual labor scavenging following the decline of the Mauryan empire पर कौन decline बेसिकली मौर्यन एम्पायर डिक्लेयर पर कौन कौन एस्टाब्लिश है पार्थियंस याचियन इंडो ग्रीक्स करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रे मो सब से सीक्वेंस तुम ना भी नहीं है पढ़ेला बेले से तो देखो इंडो ग्रीक्स आगे आसते इंडो ग्रीक तापरे साका इंडो सियासियन माने साकास सानास 3 2 1 4 about post
कोरियन फेजेस बहुत सारा आसले सुका कानवा सातवान देन तापरे बहुत सारा फॉरेनर आसिले जे कि इंडो ग्रीक साकास पार्थियंस which of the following tribes are involved in the rebellion along with Garos? Nagas, Mijos, Jaintias, Jaintia, Garo, Khasi, Jaintia, common and Garo tribes together. Orubipuram, Orubipuram movement started by Swami Vivekananda, Sri Narayana Guru, Satampi, Swamikal and K. Kalepan. Narayana Guru ହେଇଥିବେ ପୁରା movement Narayana Guru 88 रे Narayana Guru consecrated a Shiva idol at Orubipuram, challenging the Brahmanica dominance the temple. Consider the following statement regarding justice. Following statement regarding justice. It was primarily non-Brahmin movement in the Madras. Non-Brahmin movement in Madras presidency. It later gave rise to the Justice Party in 1916. Justice movement was started in Madras by C.N. Modalier. Okay. So এটা তিনটা আগ স্টেটমেন্ট ঠিক ଥିଲା সরি গাইস ঠিক আছে Ojibika were heterodox sect founded by Okali Gosala Pakuda
કેસાયાના, સીતા, એસેમ્બલી, કપિલા, અજીવિકા સેક્ટ. Makali Gosala, the sector founded was founded by Makali Gosala in 5th century. Was a contemporary of both Mahavira and Buddha. With reference to 16 Mahajanapadas of 6th century BC, consider the following statement. Mahajanapadas regarding Mahajanapadas are located in India, present day Pakistan and Afghanistan. The information about Mahajanapada is derived from the Buddhist text Anguttara Nikaya, Jaina text Bhagavati Sutta. Correct? No. Correct, Kona? So Mahajans are located in India, present day Pakistan and Afghanistan. Following statement are correct. So a questions रे क्या अच्छी पाकिस्तान भी अच्छी अफगानिस्तान कौन अच्छी महाजनपद ना वगैरह सिर्फ पाकिस्तान गांधारा दे पाकिस्तान statement is wrong and this is right. Most of the Mahajanapadas are located in northern plain of India. Kamboja and Gandhara were located present day Pakistan. यही अफगानिस्तान नहीं अंगुत्तरा निकाय gives the list of six काशी कला अंग painting yogini the Aina depicts food scene Mughal emperor a yogini female ascetic eating the Aina birds, Lord Krishna with gopis, royal hunting scene. Oh, Yogini है female ascetic holding a Maina bird. ये painting portray the female ascetic Yogini seated gracefully holding a Maina bird, reflecting Buddhist essence and essence. With Maina is famous work belongs to Japur county Kaila. It represents a long-standing figure of Yogini occupied with Maina bird. Painting Bharat Mata. The painting in New Jersey Bharat Mata depicts man with four arms holding symbolic items, a female ascetics with Maina bird, a goddess slaying demon, mother goddess with child. Bharat Mata. Bharat Mata, man with four arms items. So painting Bharat Mata is a saffron clad woman, four arms holding paddy garland. Learning, food, clothing, and spiritual. Hilbert Bill controversy. Hilbert Bill controversy 1883 was related to denial of simultaneous civilism in India. Power of Indian judges try Europeans. Press censorship by British. Partition of Bengal. Hilbert Bill controversy ଯୋଗୁ ଲର୍ଡ ରିପନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଭାରତ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଲର୍ଡ ରିପନ ସାଇନ୍ଡ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ୟୁରୋପ Indian judges को allow करिया कि यूरोपियन to try Europeans faced huge opposition from European यहाँ पे बेसिकली ये गोटे बैकग्राउंड जहाँ थ्रो रे कि यूरोपियन डिफेंस कमिटी बनाया था आईएनसी फॉर्मेशन हबार ये गोटे बैकग्राउंड भी माना जाए ताको which among the following was the first mass based political association Indian Association East India Association Indian National Congress Pune Sarvajanik mass based
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इंडियन एसोसिएशन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किए करथिले दादा भाई नाराजी समय अनुसार देखिए ये बहुत पूर्व इंडियन एसोसिएशन यही बार था बट इंडिया एसोसिएशन प्रथम करे हेतला समय अनुसार ये प्रथम हेतला 1876 76 1885 18 कैबिनेट मिशन प्लान 14 1946 proposed कैबिनेट मिशन प्लान 19 proposed constituent assembly इंडिपेंडेंट कोनटा प्रपोज कर कैबिनेट मिशन प्लान वेरी इंपोर्टेंट both grouping of provinces and independence with partition constituency assembly करा जीवो provincial grouping not partition the rejection of the Pakistan partition କଥା ये कही नथिला confirm the rejection of Muslim to partition कले grouping काई करथले clear federation A B ये तीनटा यूनियन प्रोविंसेस इंडिविजुअल लेवल करथिले गवर्नमेंट कथा who among the following was called mother of India सर्जन नायडू पिताजी कामा बेसांत जानी प्राय मुझे कौटी गोटे करेथी पिताजी कामा कहीं कह जाए मदर ऑफ इंडियन के फर्स्ट इंडियन ट्राइकलर जोटा कि स्टुटगार्ट जर्मनी रे फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यंग बेंगल मूवमेंट इन अर्ली 19th young bengal movement was led by Henry Louis Vivian DeRoggio an Anglo-Indian teacher from a member of the movement are the co-founder of the Indian Association along with Sunar Banerjee correct statement so the following are the correct तो देखो हेनरी लुइस यंग बेंगल मूवमेंट the movement were co-founder of the Indian Association भाई केबे भी नो ए धोखा थिला ए ऑप्शन विवियन डिरोजियो 1820 हिंदू थिले ऑर्थोडॉक्स थिले नेशनलिज्म रे कथा कहउथिले वुमेन राइट सोशल रिफॉर्म कथा कहउथिले ये द मूवमेंट द मेंबर ऑफ द मूवमेंट वर co-founder Indian Association was founded in 1876 so Banerjee and Anand Ban not by the Derogians okay तो ये अंकर नथिले Derogians माने young Bengal movement decline reference to the prehistoric rock painting found yeah consider the following statement rock painting of the cave of Bhimbetka were displayed and archaeology yes rock painting found at Bhimbetka are associated with Mesolithic देखो cave painting discovered 1950 by eminent archaeologists करे एसोसिएट मेजोलिथिक पीरियड ओनली ये जो ओनली दे देला ना एटा धोके धोका थिला सबु पीरियड रे मिले मु क्लास रे भी कहिची सबु पीरियड रो भिम्बेटका ये मिले ये मेजोलिथिक अछि तुमरो चाल्कोलिथिक पैलियोलिथिक सबु रे पाइबो the following stated with reference to Harappan civilization the Harappan pottery are mostly handmade painted pottery was more common than plain pottery and which of the above statement are correct
Harappan pottery are mostly handmade. नहीं बेटा Harappan painted pottery ना graver correct है Harappan both state were wrong. Harappan basically fine wheel very few thing handmade. Then pottery was more common than the painted ware. Then pottery was generally red clay होता है without fine red or grey. Reference to terracotta produced during the Mauryan period. The following statement. Terracotta मान बुझी the Mauryan time terracotta are produced on large numbers. Terracotta large number. Terracotta represents the mother goddess. Correct form. Mauryan times terracotta are produced large scale. Terracotta are saints. Mother goddesses. Northern black polish ware थिला से समय central Gangetic plain. या समय times terracotta large scale. Only animal and women. Men ର mother goddess थिले saint थिले. Which of the following statement about the location are correct? Following statement about location. Sanchi is located in Madhya. It is a UNESCO World Heritage Site for represent the spirit of Mohan. The spirit of जल्दी जवाब दियो जल्दी जल्दी देखो सांची स्तूपा मध्य प्रदेश रे भोपाल ले दैट इज 100 इसको वर्ल्ड हेरिटेज 100 महायाना बुद्धिजीवी सांची स्तूपा इज करेक्ट आंसर 1 and 2 ये हिनायना तेरावड़ा पे reference to Charvaka which of the following statements are correct? Charvaka was opposed to the quest of spiritual salvation. He believed one supernatural agency. One नुहा ये correct. Charvaka was the main founder of the materialistic. ସେଇଥିରେ ସିଏ କହୁଥାନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଲୋକାୟତ କୁହାଯାଉଥିଲା which means idea derived from the common to underline the importance of the immediate contact with the world or the lack of belief in the other world. Many teachings are attributed to Charvaka. He was opposed to the quest of salvation, denied the existence of any divine or supernatural. He accepted the existence and reality of those things that could be reference to French East India Company. Considering French East India Company was founded in 1760. French East India Company founded in 1760. The company was heavily dependent on French government. Which of the above statement? This is very important one. ମୁଁ ଏଟା କ୍ଲାସ୍ ଉପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ क्वेश्चन ପଢାଇଛି right. ସବୁ କିଛି गवर्नमेंट कंपनी थिला एटा स्टेट कंट्रोल कंपनी गवर्नमेंट कंट्रोल थिला डाउट नथिला. Consider the following statement about Battle of Plassey. Battle was fought between British East India Company and Sirajuddaulah of Bengal. The battle was the British forces were commanded by Robert Clive. The battle was fought near village Plassey, the bank of river Hooghly. So questions statement 1 is right.
statement 2 is right. How statement 3 it is not 3 भागीरथी ये क्लास रे एटा पढैथिली मने भागीरथी पर ए so 1 and 2 आसी on the river bank of भागीरथी आसी कि बेंगल आसी कह जाए सो जदी देछि सेटा भूल हो ओके with reference to हुगली आसी बेंगल आसी ता नाटा ही जाए with reference to Warren Hastings, considering following statement, the first Anglo-Maratha war took place during his tenure. तो ये क्वेश्चन ना तुम्हारे कन्फ्यूजन कौन हुए कि तुम्हें जदि माने देखिबो इजिली जदि एग्जामिनर माइंड जदि थिबो भाई हुगली तो ही भागीरथी होची ताले हुगली दे दिए ताले आंसर से एटा भी ठीक बट जदि सी भाबी देथियो भाई सी एग्जामिनर जे पाठ पढिची रियली सी कोन नदीर ना जानिची सेही जगह जो नाटा पलासी पाखर ता ना थिला भागीरथी हुगली सेही जगह ना हुगली आसी कि कलकत्ता आसी हुगली हला तो सेही अनुसार आंसर तुमर हबो तो এই आंसर जो कौन हबो इट डिपेंड ऑन माइंड ऑफ द एग्जामिनर ये कौन भाबी कि देइची आंसर क्वेश्चंस बनैची So, with reference to Warren Hastings, the following statement: the first Anglo-Maratha war took place during his tenure. Second Anglo-Maratha Mysore war took place during his tenure. The Treaty of Salbai 1782 ended first Anglo. Which of the above stated? Very easy. First Anglo-Maratha war. Warren Hastings, Anglo-Maratha. କେବେ ହେଇଥିଲା? First Anglo-Maratha 1775 to 1780. 1775 to 1782. Second Anglo-Mysore War took place during the tenure of during his tenure. So Warren Hastings कौ समय थिला तुमे जानि जिवो. Second Anglo-Mysore केबे हितला? Second Anglo 1780 1784. Treaty of Salbai 1782 ended in first Anglo. So ये सबु समय Warren Hastings थे. Yes. So 1 and 2 and 3. ट्रिटी ऑफ सालबाई एंडेड इन ओहो देखुछ मु देखिया भूल मु खाली एइटी देखि छाड़ दीची फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार नुह देखुछ मु देखु देखु भी भूल जाउची इट वाज आफ्टर फर्स्ट एंग्लो मराठा फर्स्ट एंग्लो मराठा स्लाइट मिस्टेक हेले टिके माइंड याड सेड मोर थिला कॉल फॉल टिके आसी आइला तो तो ये हबनी 1 and 2 बी सेकंड एंग्लो मैसूर ये सब consider the following pair with reference to Sepoy revolt 1857 कानपुर एबे आमे देखिले लीडर थिले कानपुर किए नाना साहेब लखनऊ सो बेसिकली कौन होई करेक्टली मैच्ड कहूँ ना हजरत ठीक अच्छी ओनली 2 फैजाबाद मौलवी अब्दुल्ला माने की लीडर इन द रिबेलियन फैजाबाद सो ये कहाला नो बी
During the partition of Bengal 1905, consider the following statement. It was carried out the Viceroy Lord Curzon. It led the Swadeshi and boycott movement. It was annulled in 1911 during the coronation of King George V. Partition of Bengal. Yes, right achi. Swadeshi and boycott is right. And boycott. Obviously annual ହେଇଥିଲା 1911 ରେ. D. And boycott. Capital को C. Mountbatten Plan last 10. Proposed partition into India and Pakistan 1947. It proposed referendum in northwestern frontier and Sylhet. It was acceded to by both Congress and Muslims. Which are correct? ठीक अच्छी पार्टीशन हम ट्रांसफर हम पावर यूनियन रेफरेंडम हम नॉर्थ वेस्ट फ्रंट सेलेक्ट्रे कि से इंडिया सहित आसिया चाहते ना पाकिस्तान सहित आसिया चाहते दीटा को पाकिस्तान पड़े बहुत कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड प्लान so reluctant. What was Jajmani system of the Mughal period? What is Jajmani system? क्वेश्चन देखो मुझे पानी नहीं कैसे correct answer is C. A reciprocal system that existed in rural India between peasantry and other occupational. Jajmani system basically barbar वगैरह peasant did service from artisan barbar was washerman potters ये return share of the agriculture produce was a hereditary system in the Mughal period prevalent in Indian एबे भी जजमानी system अच्छी पर lower caste services कि provided goods and services craft labor. Okay, so arrange करो this one.
तो ये कौन हम ठीक आंसर। तो देखो क्रोनोलॉजिकली दिल्ली सुल्तानत ये कि मामलुक डायनेस्टी ये आसले मामलुक डायनेस्टी प्रथम कुतुबुद्दीन आइबक फर्स्ट। तो कुतुबुद्दीन आइबक बी। तो ए आउ बी ये दीटा कटिगला ए आउट बी देन तापरे इल्तुतमिश सी बी 3 एटा 8 दीटारू बाहरी गला वेरी इजी वन वेरी इजी वन राइट। स्लेव डायनेस्टी 1206 रु 1290 करेक्ट सीक्वेंस ये सीक्वेंस। कुतुबुद्दीन आइबक 1206 रु 1210 फाउंडर थिले 11 रु 36 रेजिया 36 रु 40 नासिरुद्दीन मेम्बर्ड 46 रु 66 एंड बलबन 66 रु 87 कैकुबाद 87 रु 90 लास्ट रूलर ऑफ द डायनेस्टी which was not true about jizya. It was a tax on non-Muslims. Brahmins were generally exempted from it. Yeah. First ruler to collect it in India was Firuz Shah Tughlaq. It never yielded any substantial revenue. Not true. Question was asked about not true. Yeah, it was non-Muslim tax. Brahmin were generally exempted. Yeah, that is also true. Sorry, ये भी ट्रू ये भी ट्रू। ये फिरोज शाह तुगलक नहीं है, फिरोज शाह तुगलक केबेटू गलेनी बेसी किछि रेवेन्यू ना। सो दिस इज द करेक्ट आंसर रॉन्ग बट करेक्ट। ये आज पोल टैक्स था लेविड नॉन मुस्लिम ब्राह्मण है। फास्ट रूलर जी मोहम्मद बिन कसीम जोटा कि सी लगे देन तापरे दिल्ली सुल्तानात रे इवन अलाउद्दीन खिलजी मध्य नौथांती देन फिरोज दीवानी कोही created by Muhammad Tughlaq looked after last 4-5 questions Diwani Kohi revenue collection agriculture public welfare crown land Diwani Kohi agriculture Diwani Kohi established by Muhammad Tughlaq department of special design to manage agriculture जो सब लॉस होगा ना सी यहाँ करते मोहम्मद बिन तुगलक अजंता केव एपाक्सी टेम्पल सांची which of the following place are managed mural painting by कौन जगहटा मुराल पेंटिंग सांची स्तूपर मुराल पेंटिंग आसीबो नाही जनता के एटा काटी देले मोर कटि जीवो बी 1 and 2 caves are indeed known for their mural painting cave include paintings and rock cut sculpture among the finest surviving example of ancient India particularly expressive painting that present epoxy table Andhra Pradesh रे for its Vijayanagara style of architecture mural painting सांची स्तूप बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर कौन वर्कर थिला mural painting नाही which invasion of Muhammad appreciated by Caliph and Caliph and called Muhammad star of the invasion of Mathura and Kannauj. It was after invasion of Mathura and Kannauj, the Abbasid Caliph appreciated Muhammad and conferred him the Yamin ud Dola, praised him as the star of Islam. The famous stone carvings, Raghurajpur village in Odisha, associated with carving Raghurajpur village, associated with पट्टचित्र एटा बहुत ही रघुराजपुर विलेज टा कौन डिस्ट्रिक्ट रो अछि
रे अछि palm leaves. Nuakhai festival is observed in which tithi? Nuakhai. भाद्र मास पंचमी nuakhai जुहार. 1 सेप्टेम्बर मास पड़े गणेश परे. फ्रीडम फाइटर कंस्पिरेसी केस. फ्रीडम फाइटर कंस्पिरेसी केस देखिबा. भगत सिंह लाहौर कंस्पिरेसी. राम प्रसाद बिस्मिल्ला काकोरी कंस्पिरेसी केस. राजगुरु कानपुर बोलसेवी कंस्पिरेसी. ये तीनटा रु कोनटा को मैच करूची कोनटार मैच करूची. भगत सिंह लाहौर कंस्पिरेसी केस ट्रू. राम प्रसाद बिस्मिल्ला काकोरी. राजगुरु नहीं बेटा. तो ये दीटा ट्रू अच्छी 1 and 2. तो बेसिकली राम प्रसाद बिस्मिल्ला अशफाक खान रोशन सिंह राजेंद्र लहिरी ये काकोरी ट्रेन रॉबरी केस. राजगुरु नॉट कनेक्ट कानपुर बोल सके ही वाज एसोसिएटेड विद लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस. इसमें भगत सिंह सुखदेव आउ ये थिले. तो से लास्ट क्वेश्चन रेफरेंस टू थर्ड बैटल ऑफ पानीपत. 1 consider the following statement. Battle was fought between the Maratha Empire and the Durrani Empire. The Peshwa of the Maratha Empire at this time was Balaji Bajirao. Which of the above statement given correct? Last question, jaldi karo. The battle was fought between Maratha Empire and Durrani. That is true. Peshwa of Maratha Empire at this time was Balaji Bajirao. Statement are correct. Of course, Maratha Empire and Durrani Empire led by Ahmad Shah Abdali Durrani पानीपत रे आसिले 14 जनवरी 1971. मराठा अपनी को कंप्लीट हरे देले कहीं ना ये बैटल थिला माने फेमस थिले मराठा वाला. मराठा तांकर ये थिले सदाशिव राव भाऊ एंड न्यूमरस अदर मराठा ये थिले. गुरिल्ला वारफेयर फेमस थिले तो प्लेन एरिया रे से माने लड़ी पालेनी. मराठा कमांडर पेरिज्ड ऑन द बैटलफील्ड एंड डिड नियरली जोड़े कि 28,000 सोल्जर थिले. सो मराठा डिफीटेड एट पानीपत वाज अ डिजास्टर. They lost the cream of their army and their political prestige. Peshwa Maratha Empire at that time, third battle was Balaji Bajirao. So this is it. So जो माने तुम सांग साथी जो माने प्रिपेरेशन करिया चाहउजंती ओनली 30 सुपर 30 माने सुपर पिला जेमती 30 टा भलो पिला आसीबे दरकार जे कि जॉइन करंतु. समस्त सांग साथी को एटा शेयर करो एवं जी ग्रेजुएशन अच्छी सी एबेटू प्रिपेयर करि परिबो यूपीएससी पई एंड ओपीएससी पई. दीटा क्लासेस सब ताको पूरा एनसीईआरटी 1 by 1 कवर करा जिवो. से माने चाहिले जॉइन करि परिबे. सो डू जॉइन टू रेफर टू योर नियर वाइज. थैंक यू. जय जगन्नाथ. नमस्कार. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय जगन्नाथ. काली पुणी देखा हबो पॉलिटी सहित.